शुभ रात्रि, नमस्कार, आदाब। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन फाइंड द पिवोट इंडेक्स फ्रॉम द गिवन एरे। अब पिवोट इंडेक्स आप क्या समझते हैं? मतलब एक एरे में, किसी भी गिवन एरे के अंदर, जैसे ये आपका एरे गिवन है, इसका जो सम निकलेगा दैट इज आर कैलकुलेटेड 28 इसका सम आ रहा है। अब इसके सम में जो इसका लेफ्ट वाला इंडेक्स होगा और इसका जो राइट वाला इंडेक्स का सम होगा, जैसे लेफ्ट वाले इंडेक्स का सम 173, दैट इज num0 nums1 एंड nums2। 173 11 आ रहा है, एंड हम लोग को राइट वाले इंडेक्स का सम दैट इज nums4 एंड nums5 दैट इज 5 + 6 हम लोग का 11 आ रहा है। लेकिन जो ये सम आ रहा है, इसमें एक त्रुटि या फिर एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। दैट द प्रॉब्लम इज दैट 6 इज नॉट मेकिंग दैट लेफ्ट सम प्लस राइट सम। जो आपका 6 is creating a problem for making left sum plus right sum equals to total sum. That is what I am saying. जो आपका left sum है plus right sum है equals to total sum of array. That is 11 plus 11 equals to 28. That is left sum plus right sum वो total sum of array that I have found. इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस वैल्यू की वजह से, 6 की वजह से, जो कि हम लोग अगर 6 और ऐड कर दें तो ये वैल्यू आपकी 28 की इक्वल नहीं आ जाएगी। दैट इज लेफ्ट सम प्लस राइट सम विल नॉट बी इक्वल टू 28। सो हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसी वैल्यू को फाइंड करनी है, और हम लोग को बताना है कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से हम लोग का जो लेफ्ट सम प्लस राइट सम इज नॉट गेटिंग इक्वल्स टू टोटल सम। सो दैट्स द प्रॉब्लम। लेट्स गो ऑन सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स लीव इट। ओके, आई एम गोइंग। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट द क्लास प्लस पिवोट इंडेक्स। ओके, दिस इज माय क्लास पिवोट इंडेक्स। एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बना लेते हैं हमारे स्ट्रिंग आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। चलो अभी ये वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग की नोट्स की वैल्यू उनकी गिवन है। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, और यहाँ पे नोट्स करते हैं, और ये हम लोग की एरे हमने डिक्लेयर कर दिया। Now what I want, let's make this array, not it's not a variable, let's make this array. Okay, अब एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, pivot index फाइन नाम का फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग नोट्स फाइंड कर देते हैं, नोट्स डाल देते हैं। just log out this and it's going to create a method for pivot index in nums. What I'm going to do, I'm going to take two variables. So this common zero से initialize करेंगे, int सेकंड थिंग इज दैट लेफ्ट सम, जिसको भी हम लोग जीरो से डाल देंगे। हम क्या चाहते हैं, जो हम लोग का पहला टास्क है, पहला टास्क ये चाहते हैं कि हम लोग एक इसका टोटल सम निकाल के रख दें इस एरे का अपने पास। चलो कर लेते हैं, इंट या फिर इंट nums टोटल सम में हम लोग इसको डाल देते हैं प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट्स। चलो, तो इसमें तो हम लोग का इसमें तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 28 आ जाएगी, सम करके इस वाले एरे को सम करके 28 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट व्हाट, अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू निकालें लेफ्ट सम प्लस राइट सम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और फॉर लूप चलाओ, i इक्वल्स टू 0 से स्मॉलर देन नॉट स्टॉप लेन। ये काम कर सकते हैं, तो जो सम बनाए हैं इसमें ऐड कर देते हैं नम्स i प्लस प्लस, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट करके। उसका बेनिफिट क्या होगा, लेफ्ट सम प्लस नम्स i क्या इंडेक्स आएगा कि हम लोग का पहला इंडेक्स आएगा, दैट इज पहले हम लोग को इस पे जाएगा 1 पे आएगा, और 1 से चेक करेंगे 28 माइनस, शुरुआत में हम लोग को 0 होगा, तो ये 28 माइनस 0 या 0 का 28 के पूरा नहीं। चलिए हम पूरा कोड लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट मल्टीप्लाई 2, दैट इज लेफ्ट मल्टीप्लाई 2 और लेफ्ट सम प्लस राइट सम जो भी है इज इक्वल टू द टोटल सम के इक्वल है लेफ्ट सम। तो हम क्या चाहते हैं,
just return the index g7. Just stop type. It will be better to make this type. What's the problem? Okay, this is not there. Minus one. That's it. अगर ये पिवोट नहीं है इसमें तो रिटर्न कर दो माइनस वन। तो यहाँ पे हमने क्या किया क्योंकि अब हम लोग ये मानते हैं टोटल सम भी तो इक्वल होगा ना कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं इटरेशन। चलिए ट्राई रन करते हैं इसको। ट्राई रन इटरेशन वन काम करते हैं इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं अपने पास। What's the problem? What's the problem coming here? Syntax? No, not this is the problem. POD, that's fine. In terms, everything's fine. This body is completed. This body is completed. And everything's fine. चलिए ट्राई रन करते हैं कोड को। सो फर्स्ट आइटरेशन ये होगा हम लोग का। फर्स्ट आइटरेशन में बस ये होगा द वैल्यू विल गो हियर दैट इज टोटल सम। फर्स्टली टोटल सम आइटरेशन टोटल सम become 28. First iteration में टोटल सम लोग so when this loop will run, sorry, this loop will run, it will give us output 28. Now coming here int I0, it's first iteration, that is first iteration, iteration 1, and then the try run here. So it will come here, left sum into 2, left sum value is 0, that is 0 into 2 equals to 20 total sum. Let's check it. That is left sum equals to total sum, that means 0 multiplied by 2 equals to 28. That is wrong. No, this is not. Nothing. Do nothing. Just one iteration. 2. Now again the total sum will be 28. I will just copy this whole one. Total sum will be 28 again. Now, now at this iteration, I will be then in the next iteration I will go here. That is as it is post increment, then therefore it is num side, that is num 0 left sum. So we will add left sum. हम लोग left sum में nums 0 का add कर देंगे. So what is num 0? 1. That is 0 thing. 0 to next, that is the value is 1. हम लोग तो left sum लोग 0 plus. I am talking about here. तो हम लोग का लेफ्ट सम इस समय 0 चल रहा है, 0 प्लस नम 0 प्लस 1 1। हम लोग का इस समय लेफ्ट सम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट सम मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू टोटल सम। लेट्स चेक दिस। क्या हम लोग का 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 28 है? नो, दैट्स नॉट द केस। In the third iteration, let's do the third iteration. Let's check. Now the value of 3 and 3. I'm also going to write increment value of I first in increment value of I. So हम लोग का initially I equals to 0 था, हम लोग का प्री इंक्रीमेंट वैल्यू भी 0 थी, पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू भी 0 थी। Just take this over. Just write iteration 2 में हम लोग के प्री इंक्रीमेंट वैल्यू I value of I ओके। सो वैल्यू ऑफ I हम लोग का 0 है, पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू भी 0 रहेगी।
इन द नेक्स्ट आइटरेशन हम लोग की जो टोटल सम हो गया, जो हम लोग की लेट्स अगेन कॉपी दिस, थोड़ा टाइम लगेगा, बी पेशेंस बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। टोटल सम 28, वैल्यू 5 हम लोग की इस सम क्या हुई, एडिशन 1 हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू 1 हो जाएगी, और वैल्यू 5 हम लोग की इनिशियली 0 है। इस समय जब आपका यहाँ पे जाएगा तो नेक्स्ट आई में हम लोग का 0 आएगा, देन ये जब जब नीचे जाना होगा तो ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू विल बिकम 1। now here the post increment value will become 2, so लेफ्ट सम में हम लोग को कौन सी वैल्यू शामिल होगी, आइटरेशन 2, आई की वैल्यू हम लोग की यहाँ 1 हो जाएगी। सो नाउ कमिंग टू लेफ्ट सम, लेफ्ट सम में अगर हम लोग प्लस करेंगे नम्स दैट इज 1 को, और इनिशियली हम लोग का लेफ्ट सम की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये है आपका 1 इंडेक्स, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 8। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेक लेफ्ट सम मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू टोटल सम, लेट्स चेक इट, हम लोग का टोटल सम के इक्वल है लेफ्ट सम मल्टीप्लाई, तो इस समय लेफ्ट सम 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 28, no it's not, still not, then iteration, sorry this is iteration 3, this is iteration 4, 1 2 3 4 iteration, now the value of I will become 2 and post increment value will become 3, so left sum plus nums, नम्स में इसमें कौन सा आएगा 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि हम लोग का पोस्ट इंक्रीमेंट है, नहीं इसमें हम लोग की वैल्यू आई चल रही है, देन पोस्ट इंक्रीमेंट का हम लोग का नेक्स्ट वैल्यू हम लोग की 3 होगी, तो लेफ्ट सम इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सो लेफ्ट सम इस समय हम लोग का चल रहा है 8 प्लस नम्स 2 पे 0 0 1 2 दैट इज 8 3 11, 8 3 equals to 11 and left multiply 2 equals to total sum, let's check it, that is 11 multiply 2 equals to total sum, that is 22, total sum minus num size, sorry I forgot, minus nums I, because we have to track, sorry, here I have to write nums I, that is 28 minus 0 because num 0, that's 28 minus 1, and 28 minus 7 and 28 minus 3, and here will be 28 minus 6, let's check, so we have got 22 equals to 22, yeah, we have got the value, the condition will be true here, at which index, at index 3, at index 3, that is the iteration, at iteration 4 and index 3, we are getting our value, that is when it is getting true it will return the value of that, that is we are getting 3, so answer will be 3. Let's run this, run as Java application, proceed, solve compilation problem, index 6, okay, index 6, so the static volume string argument, so this is a try run that I have did this, check, solve compilation problem, everything is fine, what's the problem, so yeah, when I run this you will get the value as, okay, that's all. If you like the video, give a thumbs up.